और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के लौटते एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान राज लौट आया है, जिस पर दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जमकर आलोचना हो रही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना क्या लौटी? तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने अधीन कर अफगान में अपना झंडा फहरा दिया। सेना को वापस बुलाने के फैसले के बाद हुए इस परिवर्तन को लेकर अब दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। तालिबान राज लौटने के लिए दुनिया भर के लोग जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोमवार को तालिबान राज लौटने को लेकर कुछ लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। जो बाइडेन के इस फैसले की आलोचना करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद जो बाइडेन सामने आए और पूरे मामले पर दुनिया को जवाब दिया। जो बाइडेन ने इस पूरे मामले पर बोलते हुए अपने फैसले को एक बार फिर से सही ठहराया और कहा, अमेरिकी सेना लगातार जोखिम नहीं उठा सकती है। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. जो बाइडेन ने जहां इस पूरे मामले में अपने फैसले को सही ठहराया, तो वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 1 मई की डेडलाइन को लेकर हमारे एग्रीमेंट के बाद भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुलाने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं था। हालात जो भी बने हैं अचानक बने हैं। हम अफगानिस्तान में स्पष्ट उद्देश्य के साथ गए थे। हमने अलकायदा का सफाया किया। हमारा मिशन राष्ट्र निर्माण का नहीं था। ट्रंप के शासन में 15,000 सैनिक अफगानिस्तान में थे और हमारे वक्त 2,000 सैनिक अफगानिस्तान में हैं। We conduct effective counterterrorism missions against terrorist groups in multiple countries where we don't have permanent military presence. If necessary, we'll do the same in Afghanistan. We've developed counterterrorism over-the-horizon capability that will allow us to keep our eyes firmly fixed on the direct threats to the United States in the region and act quickly and decisively if needed. When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021, just a little over 3 months after I took office. U.S. forces had already drawn down during the Trump administration from roughly 15,500 American forces to 2,500 troops in country. जो बाइडेन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे अपने संबोधन में तालिबान के बिगड़े हालातों का ठीकरा अशरफ गनी पर फोड़ा। उन्होंने कहा, ऐसे हालातों में देश को छोड़कर अशरफ गनी भाग गए। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो बगैर लड़े कैसे अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गए और क्यों बगैर लड़े उन्होंने हार मान ली। अफगानिस्तान के नेता वहां के लोगों के हित के लिए एकजुट होने में विफल रहे। वो अपने देश के भविष्य के लिए समझौता नहीं कर पाए। But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years of U.S. military boots on the ground would have made any difference. And here's what I believe to my core. It is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. The political leaders of Afghanistan were unable to come together for the good of their people, unable to negotiate for the future of their country when the chips were down. They would never have done so while U.S. troops remained in Afghanistan, bearing the brunt of the fighting for them. And our true strategic competitors, China and Russia, would love nothing more than the United States to continue to funnel billions of dollars in resources and attention into stabilizing Afghanistan indefinitely. When I hosted President Ghani and Chairman Abdullah at the White House in June, and again when I spoke by phone to Ghani in July, we had very frank conversations.
We talked about how Afghanistan should prepare to fight their civil wars after the U.S. military departed, to clean up the corruption in government so the government could function for the Afghan people. We talked extensively about the need for Afghan leaders to unite politically. They fail to do any of that. I also urge them to engage in diplomacy, to seek a political settlement with the Taliban. जो बाइडेन ने जहां अपने फैसले को सही बताया, पूरे हालातों के लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं इस मौके पर उन्होंने तालिबान को सख्त चेतावनी दी और उन्होंने कहा, अगर किसी भी अमेरिकी नागरिक पर हमला होता है तो तालिबान को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिकी मिलिट्री अफगान में फंसे लोगों को निकालने का ऑपरेशन चला रही है। अगर इसमें तालिबान दखल देता है तो अमेरिका तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देगा। I made a commitment to the American people when I ran for president that I would bring America's military involvement in Afghanistan to an end. While it's been hard and messy, and yes, far from perfect, I've honored that commitment. More importantly, I made a commitment to the brave men and women who serve this nation that I wasn't going to ask them to continue to risk their lives in a military action that should have ended long ago. बहरहाल जो बाइडेन ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए अफगानिस्तान के नेताओं को तालिबान राज लौटने के लिए जिम्मेदार ठहराया और साथ ही चेतावनी दी, अगर तालिबान अमेरिकियों पर हमला करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या तालिबान एक पार्टी की तरह काम करता है या फिर से वो अपना पुराना रूप दिखाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।